650 books, and innumerable discourses is what is a part of Osho's legacy for us today. Over time, the translations didn't happen because of various issues that were brought in the forefront. But right now, we have a group of dedicated sannyasis who are working together to bring out the master's thoughts and legacy in a language of the masses for the country. Good evening, Namaskar, Jai Hind. A warm welcome to all on today's episode of Bhagwaan Rajneesh, our national treasure. I'm your host, Ma Prem Shweta, and you're watching us on NIN Live. Today, आज हम यहाँ हैं बात करने के लिए भगवान श्री रजनीश एक और कदम मिशन 2031 की ओर, और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुछ सन्यासी मित्र. My first guest today is Swami Amano Mahapath and Ma Bodhi Nisargam. Yeah. Thank you. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम माँ. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि स्वामी अमानो महापत and Ma Bodhi Nisargam are founders of Osho Nisargam near Bengaluru, and they have been printing books in Kannada as well as their magazine Osho Vachanam for the last 26 years. My second guest today is Swami Dhyan Sumit ji. नमस्ते. प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में. Swami Dhyan Sumit is an Osho Sanyasi, and he's the founder of Bhagwan Shri Rajneesh Foundation and Osho Ludhiana Meditation Society, which is the torchbearer of Mission 2031 to save Bhagwan Shri Rajneesh legacy for generations to come. My third guest today is Swami Anugrah. Pranam. Swami Anugrah is an Osho Sanyasi, and he joins us from New Jersey, USA. My first question today, आज का मेरा पहला सवाल अनुग्रह के लिए है, स्वामी अनुग्रह जी के लिए. स्वामी अनुग्रह, आपको कैसे लगता है एक सन्यासी के तौर पे, जब मास्टर की किताबें बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में अब आने वाली है या आ चुकी है ऑलरेडी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं स्वामी तथागत जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बड़े किताबों से जुड़े हुए थे ओशो के टाइम से. 97 में एक किताब आई थी, मनमोहन सिंह जी ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इनॉग्रेशन की थी. वो हाल ही में मुझे पता चला वो आपकी भी फेवरेट किताब है, इंडिया माय लव. तो चाय विथ निर्माण से मुझे पता चला आपके. तो I say it in English, okay, for everyone. Our Pune ashram godown was full of books piling up that time, and Swami Devendra was the coordinator of distribution. And Devendra was super lazy and has no vision, so he had also no connection with Osho centers. Swami Kirti went to Jayesh and regarding this issue, that godown is full of books, how can we distribute to masses? And that's how Swami Tathagat was appointed for this job. And Tathagat planned exhibitions with the help of different artists and politicians. You maybe know that Swami Tathagat also was involved in inaugurating many exhibitions all around the India those days. Prime Minister Modi, that time he was Chief Minister Modi in Gujarat. He was also inaugurating one of the books, and then Atal Bihari Vajpayee also, and he had a connection.
with Chandrasekhar, Prime Minister Chandrasekhar. And he really knew, he had a vision about Osho's books, how to reach to masses. And Swami Shunyam also from Delhi also joined him, and also Amit, Osho's brother, joined him in this, and many more names I got. So, and when Osho's India My Love book was inaugurated, Zakir Hussain, Shivamani, and 3 more artists, they came to 5-star hotel in Delhi, where the exhibition was organized. Tathagat's contribution is immense when it comes to books. That's why today I remember him, and I feel like sharing about this. Yeah, he would be very happy if he was around here to see Sumit's mission of 2031, and Swami Mahapath and Ma Nisarga's efforts to reach to everyone, and he would be. And yeah, so then when it comes to OIF has been always manipulating. They want to present Osho in a very different way, the way they wanted. OIF has been distorting and twisting Master's words. In their books, you will see a lot of changes, which is if you hear the original audio from Osho, if you hear the original discourse from Osho, and if you match those books which are created by, you will be very surprised. They really distorted his work. And Jayesh and his company, his team want you to believe what they want you to understand. Osho himself was never into copyrights, and he was. Tathagat, can you show the Tathagat? Yeah. Yes, Wow. we'll show pictures of Swami Tathagat, because this would be incomplete without him and his vision to take Osho's books to the masses. Absolutely. Yes. Wow, look at this. This is from Nisarga. He continued. Okay. Even he left Pune, he continued, his exhibitions. He was having a world book fairs in Delhi, in Ansal Plaza. Okay. That time, after that. And he was very passionate. So without mentioning him, today's program will be incomplete, So, and Swami Mahapath and Ma Nisarga has been printing 65 books in Kannada, and Swami Sumit has been begin his work in Punjabi, and his mission 2031 is what we look forward to. And his aim is to translate 650 books, and we have a 22 official languages, and we have many more languages to translate. So I congratulate for him, and I really support him in this mission. A wonderful job he's doing. And Swami Arun also has been doing since many years, translating his books in Nepalese. Wow, this picture is when Tathagat and Swami Kirti came to New Jersey, not long ago, 2 years ago. Yeah, it was a meditation camp. So yes. So yeah, I take this discussion further now. मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ और I go to Swami Amano Mahapath and Ma Bodhi Nisargam. And Ma Bodhi, you are credited with being the woman behind the whole idea, to translate Osho's work in Kannada. How did this begin? How did this thought come into you that this has to be done in Kannada? Because so far, I must tell my viewers, more than 65 books have been translated in Kannada. And they even run a monthly magazine called Osho Vachanam in Kannada for Osho lovers. And they've been doing this for the last 26 years. So I want to ask you, Ma Bodhi Nisarga, how did you begin with it? How did this just start with you?
Ma, you're on mute right now. You'll have to unmute yourself. Yes. Ji, ji. Yeah, done, done. Yeah, please. This will be quite a long story, kind of. Okay, so Yeah, it please. is not, I was just a media. It was Osho who chose. Can you listen? Are you able to Yes, listen? yes, I can hear you. Yeah. Yes, yes, we can hear you. Yeah. Absolutely. Yeah, it's a very mysterious meeting which happened when I was in Mumbai working with uh, forum leader Khurshid Merchant. So, as a personal secretary to her. And she used to go all around the world in leading programs. And one in the month of December, I think it is 1984 or 85. I don't exactly remember the year, but my sense is 1984, December. So it was a full moon day. I was just standing in the corridor and watching the moon. Even now, I shiver actually. My hands went up, tears came, laughter, and legs down. So I was blissed up, kind of. So I don't know how long it went on. Uh, I don't know really. Then I was just floating, kind of feeling. So in the floating way, I went into her room. She had a small library. My hand went into a book. So the book I picked up, and the cover was not there. It was a red book. I just opened the first page. So, master's photo, Osho's photo, Sufi. So I was again gone fully, I don't know, whatever the word you want to say. Uh, so that book's name was Ultimate Alchemy, Atma Puja Upanishad. So that was my search. So the answer is there. That's it. So Osho's voice, I did not know at that time it is Osho's voice. So Anuvad Karo, it is the English book, but the voice is Anuvad Karo, Anuvad Karo. I said, what is this? I just cannot, who am I? What is it? What is this voice telling? I was again shocked. I said, maybe I have gone mad. So it took 10 more years for the work to begin. So we took the sannyas in Nandi Hills from Anand Swabhav. Both of us took the sannyas and we immediately went to Pune, Osho commune. And my hand wrote translation. I did not write again. It is the hand which wrote translation on the form. And then there was one Swami Alok, if I remember rightly. He was in the welcome center. So he said, please meet Manilam. So we both went and met Manilam. She said, please meet Tathagati. So we went there, and there was 4 books which was given at that time from Karnataka, translated by one Mr. Shan Bhog. So he was not even a sannyasi, but he has translated Bhaja Govindam
I teach you religiousness, not religion. Sambhog se Samadhi ki aur, Shiva Sutra. These are the 4 books he has translated. And he had given that books to commune, to Tathagat. So Tathagat asked, immediately, will you publish this book? Then Prasad said, I will think it over. That was the first time I had running the business, PSR Computer Graphics. That is the first time I made some money, some 8,000, something like that. So Prasad said, we will print one book. No? So he said, okay, Tathagati, we will print one book. So he was actually working with another institution called Breakthrough Foundation. So he was leading programs. So in that he had a friend. That friend had a printing press. Okay. So that printing press, he accepted to print the books with on he described it as pay when you are able. yes. Oh, That boy who had participated in my program said, "Look, Prasad, I know you will give me. I'm not going to ask you money. I'll print the books and give it to you. You give me when you want to give me the money. You sell the books, you give me the money later." So Yeah. Yes, sir, Ramesh. then those 2 books got printed, and I just gave him whatever the profit Padma's business had made for the first time. I said, "This much cash you have. This is what we have got in our hand." And then about 20 days later, we had 2,000 copies of 2 books, Bhajagovindam Mudamate and I teach you. ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು Ha, ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ I ಧರ್ಮವನ್ನು Teach You Religiousness, brought over in Kannada. We had 2 books. And then we didn't know what to do with these books. Where are we going to go and sell these books? We were not in the business of selling books. of We were course. just making our own DTP and giving it to people, particularly as a small business venture which Ma had started. So I had another friend of mine who was associated with us on rural development and environmental campaigns. We had Okay. participated in various environmental protection activities as a part of our rural development activity. And we had worked for more than 10, 15 years with that friend of ours. His name is S.R. Ramaswamy. So I went to him and said, "Look, we have done this work. We have got the books. I don't know what to do." He said, "Don't Mhm. worry. Some arrangement can be made." He was associated with a magazine called Utthana, which was coming from Vishwa Hindu Parishad. Okay. So they had their network of book distribution. He called All the right. person uh, who was working on book distribution. His name is one Mr. Jagirdar. He Okay. now works for another institution called Aravindo Kapali Shastri Institute. It's called Sakshi VC. They translate Vedas into English and Kannada and other languages All and right. do that. All right. That's an interesting work that they are also doing. Ji. He introduced to Mr. Jagirdar and just told him, uh, he's our friend. Just see, there is a book that needs to be distributed. See what you can do. So Mr. Jagirdar said, "Sir, if you say it has to be done, it will be done. There is nothing more to talk." So our printing and our distribution and all these activities, as Ma was saying, was simply happening. We were just more a conduit
rather than individuals doing anything. And it went Amazing. on. The third book came, the fourth book came, then Padma started translating. Now you take over. So, like that, the whole translation has begun, and yeah, still more Can we books are. see a few covers? Can we see a few books? Can you show us a few Yeah, covers? Yeah. yeah. This is book called Sadhana Sutra. This is Jnanodaya. This is from Ashtavakra. Okay. Okay. And this is from Patanjali, no, Bhagavad this is Gita. from Bhagavad Gita, Oh, okay. Right. Krishna's first volume, Okay. Gita Darshan first volume. Okay. Ji. Then Ji. this is another book on Patanjali Yoga Sutra. Okay. And then this is Shiva Sutra. This is one of the first books that we produced. Yes. Yes. Yeah. His name, the first person who translated is a person called Ganesh Sharma. Okay. All right. And he comes from an interesting village in Karnataka called Mattur. And the people of that village called Mattur, most of them speak Sanskrit as their language, even for Oh, day-to-day purposes. yes. Yes. We heard of this. Yes, we have. We heard You of this heard? village. This person Yes. comes from that village. A very nice person who was quite old at that point of time, and he was quite happy that his books got published somehow. Yes. Yeah. Swamiji, I want to ask you this. Yes. Generally, because of the copyright issue, a lot of Huh. issues are faced in translations. Okay. Yeah. What issues and roadblocks did y'all face? Because y'all are sort of pioneers. So far, 65 books is a very high number to be translated. So, any Yeah. roadblocks you faced that were there? See, let me tell you how the thing happened. Okay. Ji. Initially, Hmm. after we met Tathagat and Neelam and we agreed to do the publishing work, Mhm. formal agreement of publication was made with us. Okay. Which Okay. we had for about 8 to 10 books. Till 1999, whatever books we brought, we had an agreement with the uh, commune here in Pune, and we published the Ji. books. Okay. And then this issue of giving copy royalty came up. Then we said, Okay. look, giving royalty, giving money to the commune, giving money to Osho's work is not our problem. Money is not our problem. But the issue is this, that Master himself has said there should be none of these legal issues bothering sannyasins who do my work. Yes. So the commune should support sannyasins in all ways possible. And the relationship is between the master and the sannyasins who do this work. Completely. So Completely. we want to keep that guidance of the master in reality. Ji. Okay. And number two, we have not made any money till date from the books. In fact, we keep putting money. Ji. Time and again, we keep putting money. Unless we put money, new books won't come. And we have to wait for the other books to get sold. Sometimes each book takes 8 years, 10 years to sell 2,000 copies. Of And course. some books are simply lying in our almirahs. India, My Love took 14 years for us to sell. And Dharmapada that we have printed has not been sold. We sold about 400 copies. 600 copies are sitting with me. So we don't make money in these books. And our Of course. intention is not making money. So don't pressurize us to give you any royalty. And when the discussion came, who is that person? Devendra. Devendra said something. I was a little upset by what he said. I said, look,
We are not going to give you any money. Do what you want. We are going to continue publishing books. This is the statement that I made at the commune in 1999, just before the year 2000 was happening. We were there in December, around 28th or 29th December. We had met Devendra, and we told him, and then I have not gone to get their permission. Okay. But what we have done very clearly is that we did consult the lawyers. There is a good friend of ours by name Prem Geet in Pune. All of you must be knowing him. Yes, Prem yes, Geet and Anadi are working very closely in Pune yes, yes. for all the things that are happening against the commune. Prem Geet, myself, and Kiran went and met a senior lawyer in Pune. He gave us one advice: look, you keep producing books. It is their responsibility to prove that you can't produce books because they have the rights. Let them come to the court. Let them prove it in the court that they have the rights. So till they trouble you, you keep continuing publishing the books, which anyway we were doing. So we were doing the same thing from 2000 to 2012. I think 2012 or 2013 we met Prem Geet. Okay. And after Okay. the lawyer also said that the issue was more or less over. And before this, I'll tell you one more little thing. This is Ji. from Tathagat. Tathagat Okay. told us very clearly at one point of time, look, Prasad, there are no documents with the commune. Nobody has given them any legal rights to question. And the logic is very simple. How can they question an Indian who publishes books about Rajneesh and Osho? Whether you call Rajneesh or Osho, it doesn't matter. His books, how can anybody stop publishing? And in our own languages. So they will not have any locus standi in the court if they actually go. Which judge in India is going to allow a set of Americans and people like that claiming rights over our person and our works? So go ahead and publish, dekha jayega. So with these two foundations, we just forgot about the commune. We simply continue to do the work. And then Tathagat had also suggested one more thing, that let each book contain a, what do we say? This book, a sentence which says it is submitted to the master. Okay, you're dedicating this book to Osho. So put that also in the book. Let them question what you are doing. So these were the few things that came in between to help us out, both in terms of a legal thinking on that and also in terms of clarity on our own conscious action. All that I can say is we are open to being questioned by the commune. And if they have to call us for the court, fine, we will go to a lawyer. We have got enough intelligent lawyers in this country who will drag the case for the next 2 decades. And we will continue publishing the books by which time. And personally, if you ask me, I have no commitment to being right about anything. If they don't want me to use Osho's name, I will change it into Bhagwaan Rajneesh. I will change it into Acharya Rajneesh. I will change it to any other name. क्या फर्क पड़ता है मुझको? It is the message which needs to go, and we will ensure Osho's photo is always there in the book. So nobody can stop us. And if they put a case on Anubhava Prakashana, I will start Anubhava Prakashana. I'll start another publication. We'll start 100 other publications if we have to. Yes. Nobody can stop it, So that way, it is pure ignorance of, indifference to their. Ji. Ji. I think we've lost connectivity with Swamiji right now. Yes, yes, Swami Anugrah, please. Did it connect again? Anugrah, you're on mute.
Oh, can you Uh, put it now? ओशो जगत yes, में yes. सन्यासी One minute, I will Anugrah. stop 1 here, minute. and if yeah, No, no. We had lost connectivity with you, Swami Amano. But this okay, point that you have put up, this point that you have put up, yeah, and the rebellious spirit that you have shown is what Osho Sanyasi is actually all about. yeah, Yes. yeah, To and have that the is the stand message that we with got your from Osho very clearly. डरो मत, देखा जाएगा, करो. Brilliant. So, Brilliant. Yes. Yes. so I Yes, think Anugrah. जी स्वामी महापथ की बातें सुनते सुनते मुझे 2 किस्से याद आए, तो मैं शेयर करना चाहूंगा थोड़े में। please. जी किताबों का बड़ा महत्व रहा है इसमें सन्यासियों की जिंदगी में। ये मुझे तब पता चला जब मैं वेलकम सेंटर में काम करता था, तो हमारे को एक फॉरम में पूछना पड़ता था लोगों से हाँ, कि हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट ओशो। तो या, उसमें ज्यादातर लोग बुक्स के ऊपर टिक करते थे हम्म, कि ज्यादातर लोग 80% लोग, यहाँ काफी लोग, बहुत कम लोग थे जो लिखते थे कि फ्रेंड्स ने बताया या हमें किसी से। तभी मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, तो बुक्स ही एक जरिया था। तो मैं फारम में पढ़ता था लोगों के हाउ डिड दे फाइंड आउट अबाउट ओशो एंड कम्यून। सो इट वाज ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज बुक्स, दे टिक मार्क बुक। और या, एक और किस्सा याद आया, इन्होंने 99 की बात की जब या तो I was also तो तभी चीजें बहुत खराब हो चुकी थी तब तक। 99 में आपको पता होगा, स्वामी ओशो का बॉडीगार्ड था संत महाराज। उसका जी नाम ही ओशो ने संत महाराज रखा था, उसको कोई और उसी नाम से कोई जानता नहीं है ज्यादा। तो संत महाराज को मैं उनके साथ ही रहता था उन दिनों। तो वो फ्रांस में गए थे, पूना 1 में। ओशो ने आशीर्वाद देके भेजा था उसको कि मेरी किताबें तुम ट्रांसलेट करो फ्रांस में जाके। तो वो इंडिया में और फ्रांस में दोनों जगह रहते थे। तो एक बार मैंने उसको जयेश की ऑफिस से निकलते हुए देखा, बड़े दुखी, और मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया आज मीटिंग में तुम इतना नाराज और दुखी क्यों लग रहे हो। तो उसने बोला मैं घर पे बताता हूँ सारी बात। तो जयेश ने उसको $2.5 लाख मांगे उससे। उसके पास कॉपीराइट की, जो ट्रेडमार्क कॉपीराइट की जो कीमत मांगी, क्योंकि उसके पास जी बहुत किताबें थी। और 2.5 लाख ना मिलने पे जयेश ने उसको बोला जला दो उसको, सब किताबों को, ठीक है, ऐसा ऑर्डर उसने, हाँ, देवेंद्र और इन सब ने मिलके। तो and incidentally, he had to burn the books. he did? yes He did, yeah. Oh my God, this Yeah, I yeah. don't know because I left No, this after is that. what Tathagat had told us. He had to yes literally destroy the books. तो मैं घर पे पूछा अभी क्या करोगे, तो उसने मेरे को बड़ा बताया मुझे कि यार ओशो ने मुझे आशीर्वाद देके भेजा था, ये लोग कौन होते हैं ऐसे करने वाले। और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि चीजें कहाँ से कहाँ बदल गई। ओशो ने उसका जी कई डिस्कोर्सेस में नाम लिया है और उसको अपॉइंट किया है, और कई बार उसके बारे में बताया ओशो ने किताबों के बारे में बहुत। ओशो खुद कवर चुना करते थे किताबों का, तो मेन जो कौन सी फोटो आनी चाहिए किताब के ऊपर, ओशो को कुछ तस्वीरें दिखाई जाती थी, तो उसमें से ओशो खुद चुनते थे। इतना ओशो को पड़ी रहती थी किताबों की, बड़ा ही वो। ज्यादातर वो कम्युनिटी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते थे ओशो, लेकिन जब किताबों की बातें आई तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि लोग उनको तस्वीरें दिखाएं। और तो मुझे ये 2 किस्से याद आए, तो बस मैं शेयर किया आपके साथ। yes while we are here talking मेरा about ये मेरा Osho's books मेरा ये भी कहना है yeah कि अभी जो भी हर्डल आते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ डराते हैं, ठीक है। अगर आदमी कंटिन्यू करे ना अपना काम तो कुछ नहीं कर सकते। अभी महापत जी कर ही रहे हैं ना, तो सुमित को भी ऐसे ही करना है। उनके नोटिस को फाड़ के फेंक देना है या उसको इग्नोर करना है। उनके जो नोटिस जरूर भेजेंगे वो लोग, उनके पास कोई अभी ज्यादा काम बचा नहीं है सिर्फ हैरेस करने के अलावा, ठीक है। तो वो करते रहते हैं, उनकी फितरत में है, ठीक है। जी One of the things that has happened is our Facebook account of Osho Nisargam Meditation Center has got blocked. okay That they have been able to do. they do it And anyway, we are not big time in social media, so it's all right for us. लेकिन वो कोर्ट नहीं आते हैं कभी भी, ये सब नोटिस नहीं, भेजते हैं, कोर्ट नहीं आते हैं, तो छापते रहने का
ओशो हमारे साथ हैं, ये सोच के हम आगे बढ़ते रहने का बस. Yeah. And in As I fact, speak about Osho's books, I one must more even tell thing, my one viewers, more मैं अपने thing, दर्शकों Maji. जी One more thing, Maji. It is time that we put our resources, we put our time together, and we have to make these things big. yes, of If course. we don't make it big, it is difficult to fight these people over a long period of time. जी Somehow we need to be able to create the resource and the right forum wherein which these things keep on becoming bigger and bigger. जी महापात्र जी, अभी जी बहुत लोग जुड़ने वाले हैं, देखते जाइए. नेक्स्ट हाँ धीरे धीरे yes, मराठी लोग जुड़ेंगे, गुजराती जुड़ेंगे, हर तरह के हाँ. लोग जुड़ेंगे. अभी सुमित स्वामी ने आपने जो काम चालू किया है ना, देखते जाइए. अभी इसको कोई नहीं रोक हाँ. सकता, फैलेगा. with करना पड़ेगा. Swami Sumit's initiative of Mission 2031, this has given a complete new direction to bring, let me say it, that India is a large country. India एक बहुत Yeah. बड़ा देश है, विभिन्न लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पे है. वी आर लिंग्विस्टिकली रिच. तो हर भाषा में अगर मास्टर की किताब छपती है तो his teachings, his thoughts reach into the minds and the hearts of the people of this country. लोग One, अक्सर एक आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ओशो की Shweta, किताबें हिंदी में और इंग्लिश में जी माँ जी Shweta, 1 minute. In Telugu, the books have come. Quite a number of books ओके have come. And also in ओके Tamil. ऑलराइट Also in Tamil, much more books लॉट have मच मोर यस Yeah. much यस more. And in Malayalam also. जी जी Yeah. So Yeah. this is what ये I जी know. यस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यस. मैं एक और वाकया बताना चाहूंगी. ये वाकया हमारे एक मेहमान ने हमें इसी शो के जरिए बताई थी. वन ऑफ आवर गेस्ट स्वामी ज्ञान एकिन had once quoted in his interview कि ओशो हैड a lot of books for himself. मास्टर के पास खुद की पढ़ी हुई बहुत सारी किताबें थी और उन्हें एक आदत थी कि हर बुक में, हर किताब में वो अपने सिग्नेचर भी करते थे और पीछे एक पेंटिंग भी बनाते थे. और ऐसी बहुत सारी किताबें थी. दे वर कन्वीनियंटली शिप्ड आउट ऑफ पुणे अंडर द प्रिटेक्स्ट कि वो एक एग्जीबिशन जा रहे हैं लंदन. जब कम्यून में शोर मचा इस बात को लेकर तो काफी किताबें वापस आई, सारी नहीं आई, और हर किताब से सिग्नेचर और पेंटिंग काट दी गई थी. The signature of the master and his painting were cut from books and then they were brought back and nobody talks about this. So when we are speaking about books today, we should also remember that these books also are a part of our legacy and they have been, distorted in this way. With this, I come to Swami Dhyan Sumit ji. एंड स्वामी ध्यान सुमित जी, आप फिलहाल बुक्स पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं. अभी हमें स्वामी जी और माँ कन्नड़ में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तमिल तेलुगु में ये ऑलरेडी हो रहा है. और इस देश में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर्स हैं. तो स्वामी जी, आप ये पंजाबी में कर रहे हैं. मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है स्वामी जी. लोग बात कर रहे हैं आपके लिए कि आपने टाइटल जो है किताबों की वो सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर. जैसे तलाश किस दी इज एक्चुअली हु एम आई. तो ये तलाश किस दी कैसे हो गया है, इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग? व्हाट रोड ब्लॉक्स आर यू फेसिंग? माँ, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया मेरे को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए. हमने ये जो कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था, मिशन 2031, हमने आपकी के चैनल के थ्रू इसको शुरू किया था. जी और जब हमने इसको शुरू किया तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग बातें थी, उनके अलग-अलग उनकी अलग-अलग क्वेरीज थी कि ये मिशन 2031 कहाँ से आ गया और 8 साल की प्लानिंग आप क्या लेके चल रहे हो. उस समय ये बात बड़ी बचकानी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई आउट ऑफ द ब्लू मून किसी ने कोई बात नहीं बोल दी, कोई बढ़ चढ़ के किसी ने बात बोल दी, कोई ऐसी बात बोल दी जिसका कोई सिर पैर नहीं है. लेकिन आप देखिए कि हमारे से पहले
माँ और स्वामी ऑलरेडी काम कर रहे हैं कन्नड़ में, और मलयालम में काम चल रहा है, तेलुगु में चल रहा है, जैसे माँ ने बताया अभी। तो इसका जी मतलब जी काम तो पहले ही चल रहा था, लेकिन हम लोगों को, जैसे अभी स्वामी जी ने बोला, कि हम लोगों को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू डू समथिंग रियली बिग। अब वो जो बिग होगा, वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ एंड ऑल अदर सन्यासीज। मिशन 2031 जो 8 साल की अभी जर्नी है, उसमें हमारा मिशन तो था 650 किताब को कन्वर्ट करना पंजाबी के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि गुरु के जो और लवर्स हैं, वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जी आपके चैनल के माध्यम से हम वो सब, क्योंकि हिंदुस्तान में 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज में, हिंदी में तो ऑलरेडी गुरु काम कर गए, पंजाबी में हम कर रहे हैं, और कन्नड़ के स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं, और 3 लैंग्वेज इन्होंने और हमें बता दी। Marathi maybe. जी, In Marathi तो also. या तो यस अभी जीवन हम जागृत लोगों को टोटल 22 लोगों को, 22 लैंग्वेज के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना है इस मंच पे, सो दैट कि 2031 तक गुरु की 650 किताबें ना बल्कि पंजाबी में, बल्कि ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया वो कन्वर्ट हो चुकी हों और पब्लिश हो चुकी हों। ये 2031 मिशन का एक्चुअल अभी शेप ही बदल गई, अब शक्ल बदल गई। हम लोग शुरू हुए थे पंजाबी से, लेकिन अभी ये जो आग है, ये जो वेव है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर लैंग्वेज की हर स्टेट में जाएगी। और जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग इसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं, वो सब लोग जुड़ेंगे और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम लोग सब लोग इकट्ठे होंगे, तो हमारी बात का मतलब और ढंग ही बदल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट इंटरव्यू में भी बताया कि पंजाबी में ऑलरेडी 48 बुक्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि हमने नहीं करी, OIF ने करी थी। 48 बुक्स ऑलरेडी कन्वर्टेड जी हैं, और 72 बुक्स ऑलरेडी ट्रांसलेटेड हैं, जो पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि उनका कॉपीराइट का इशू था विद द पब्लिशिंग हाउसेज एंड कन्वर्टर। जो ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका इशू था OIF के साथ। जैसे स्वामी महापद ने बोला कि he was not जी willing to pay royalty, so this is the same problem we had in Punjab. So now ओके what is the development in last 1 month? We approached that guys who who were the publishing houses for OIF for 48 books. तो उन ओके लोगों ने 48 बुक्स की रीप्रिंटिंग बंद कर दी है। वो रीप्रिंट OIF में नहीं करेंगे, उन्होंने OIF को मना कर दिया है। दिस इज द वन। सेकंड, वो जो 48 बुक्स दोबारा कन्वर्ट करेंगे, अब वो हम करेंगे अंडर द नेम ऑफ भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन। जी और जो 72 बुक्स थी, उसमें हमने पहली किताब उठाई थी, मैं कौन हूं। अब माँ, आप ये बताइए कि अगर संभोग से समाधि की और किताब हो, तो उसको पंजाबी में या कन्नड़ में या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसका नाम है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। जी वो इंग्लिश में ये नहीं लिखा गया संभोग टू समाधि की ओर। जब हम एक लैंग्वेज में बदलते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं परमात्मा भगवान, तो पंजाबी में ना परमात्मा बोला जाता है ना भगवान बोला जाता है, रब बोला जाता है, रब। जी तो देयर इज सम वर्ड्स जो आपकी लैंग्वेज में वो चेंज होंगे। जैसे मैं कौन हूं, इसका होगा, मैं लिख सकता था मैं कौन हूं, मेरे पास ये लिबर्टी थी। लेकिन जो आदमी पंजाबी की किताब पढ़ेगा, उसको पंजाबी के ढंग से ही जानना है उसको। गुरु देखिए, गुरु का जो बोलना है या गुरु का जो जो बोला हुआ है, जो हम लोग लिख रहे हैं, वो अपने आप में ही इतना अद्भुत और मिट्रिस कि हम लोग उसके अंदर उसको और नई चीजें और नहीं कुछ कर सकते। उसके अंदर ऑलरेडी इतनी मिस्ट्री है कि अगर हम लोग कोई एक ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी हिंदी या इंग्लिश का है और उसको हम पंजाबी में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको समझ नहीं आएगी। मैंने आपको अभी एक पोस्टर दिया है हमारी सेकंड बुक का, द ज़ेन पाथ ऑफ पैराडॉक्स। काइंडली आप शो कर सकते हैं स्क्रीन Yes, I request the studio to share the pictures given by Swami Sumit. This is पे? the देखिए, next one. Yeah, ये तलाश किसदी है जी. The next one after this. ये जैसे One अभी more. कांति सूत्र साक्षी भाव है, ये हमारी दूसरी बुक छप रही है।
ये कन्वर्ट हो रही है क्रांति सूत्र और साक्षी भाव. दिस इज आवर in थर्ड. the path of paradox. Yeah. अब मैं पैराडॉक्स को अगर पंजाबी में लिखूंगा, मैं लिखूंगा द पाथ ऑफ पैराडॉक्स. तो पाथ का मतलब होता है रास्ता हिंदी में, और पंजाबी में होगा राह. तो ऐसी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी, और हम लोग उनके जो टाइटल्स हैं उनके नाम हम लोग चेंज करेंगे. क्योंकि देखिए, एक जो पंजाबी का आदमी है, तो मैंने भी यहाँ पे ये सुना था, जैसे आपने मेरे को बताया कि जो हिंदुस्तान है उसमें बहुत से लोग हैं जिसको पंजाबी आप सुन सकते हो, मेरी पंजाबी सुन लोगे आप, थोड़ी बहुत समझ लोगे, क्योंकि तो आप मराठी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे. जैसे मैं कुछ समझ तो लूंगा, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा. तो जो ये लैंग्वेजेस है ना, ये जो हमारी और स्टेट लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो लोग उसको जी. पढ़ते हैं तो उसके लफ्ज, उसके वर्ड्स चेंज होते हैं. तो इसलिए हम टाइटल्स भी कुछ चेंज करेंगे. जैसे गीता दर्शन है, तो गीता दर्शन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पंजाबी में भी गीता दर्शन ही होगी. अगर हम लोग संभोग से समाधि की और इंग्लिश में लेके गए तो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस हो गई. नहीं तो ये उस टाइम पे भी गुरु के पास भी तो थी ना ये, कि वो संभोग से समाधि की और इंग्लिश में ही लिख लेते. सो ऐसा नहीं है. जैसे जैन की किताबें हैं, और कुछ ऐसी किताबें आएंगी जो जिसके हम लोग नाम चेंज करेंगे. जैसे कुछ चीजें हैं, गीता दर्शन है, और कुछ महावीर के ऊपर गुरु ने बोला है, कबीर के ऊपर कुछ बोला है. तो उन किताबों के हम लोग नाम, टाइटल्स जहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी उनके नहीं चेंज करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको चेंज करेंगे. तो ऑलरेडी हमारी 3 बुक्स ट्रांसलेशन में हैं, जो कि पब्लिशिंग में जाएंगी, और वो हमारी जो वेबसाइट बन रही है भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन.com, उसके ऊपर ये पंजाबी की सारी बुक्स ई बुक्स के अंदर भी कन्वर्ट होंगी. तो ये जो 2031 का हम लोग लेके चल रहे हैं, पंजाबी की तो लैंग्वेज चेंज करने में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस हमारे माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सन्यासी और ओशो लवर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमारा मोटो ये है कि उन सब लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करना, और एक वेव में हम लोग सब लोग इकट्ठे होके काम करें. जी. जी. एक और प्रश्न आता है जो आपके लिए है, वो ये है कि यू हैव पोस्टेड ऑन साइट्स आस्किंग फॉर कंट्रीब्यूशन. या और ये विषय भी एक चर्चा का विषय हुआ है कि अब तक शुरू नहीं हुआ, तो कंट्रीब्यूशन किसकी, बुक की प्राइस क्या होगी, क्या है. तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे स्वामी ध्यान सुमित जी? देखिए, हमारी कोई भी किताब 200 रुपए से ज्यादा नहीं रहेगी. हमारा जो मैक्सिमम प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज रहेगा फॉर बुक फॉर 130 पेजेस टू 180 पेजेस. एवरेजली 150 160 पेजेस का जो बुक रहेगा, उसका जो प्राइस रहेगा एमआरपी, वो 200 रुपए का रहेगा. पहले जब हम आपके यहाँ पे चैनल पे आए, क्योंकि तब हम लोगों ने शुरुआत ही करी थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर दीज वन लॉट ऑफ पब्लिशिंग वाज तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का हमारा अप्रोक्सीमेटली हमारा हमें टारगेट मिला था कि इतना खर्चा आएगा. लेकिन हमने और चीजों को भी देखा था, जैसे कि पंजाब में पेपर के ऊपर टैक्स ज्यादा है और हरियाणा में टैक्स कम है. सो डू वी आर नाउ एबल टू फाइंड आउट मोर पब्लिशर्स जो कि अंबाला में है, हरियाणा में है. तो हमने उनसे बात करी, तो अब उसकी कॉस्ट कम हो रही है. सो नाउ दिस कॉस्ट कमिंग अराउंड 80,000 to 90,000. सो दिस इज सेविंग फॉर 40,000 रुपीज. सो हम लोग इन चीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कॉस्ट कहाँ से कम कर सकते हैं. और रहेगी माँ श्वेता बात कंट्रीब्यूशन की, जैसे अभी स्वामी महापदा ने बताया कि उनके, देखिए, हर आदमी के पास ना एक लिमिटेड फोर्स है, लिमिटेड एनर्जी है. आप उस लिमिटेड एनर्जी के अंदर काम करोगे तो आपका काम भी लिमिटेड ही रहेगा. बट इफ यू वांट टू डू अनलिमिटेड वर्क, यू हैव टू बी क्रिएट द अनलिमिटेड सोर्सेस फॉर दैट. जैसे कि आचार्य श्री रजनीश ने एक किताब थी उनकी, अनंत की पुकार, उसके 12 एपिसोड. तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूशन क्यों मांग रहे हैं, तो मैं उन सबको एक रिकमेंडेशन करूंगा कि वो पता नहीं वो ध्यान करते हैं या नहीं करते, या उन्होंने कभी ध्यान किया है या नहीं किया,
लेकिन वो अनंत की पुकार सुने या पढ़ें। तो उसके अंदर आचार्य रजनीश ने एक क्योंकि आप कॉपीराइट का फिर आपके यहाँ पे इशू है, नहीं तो मैं वो गुरु का डिस्कोर्स ही यहाँ पे सुना देता, लेकिन उनकी 2 लाइनें मैं जरूर सुनाना चाहता हूं, जहां पे गुरु ने ये बोला कि मेरी एक सीमा है और उस सीमा के बाहर जा नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा काम उन सब लोगों के पास जाए जिसको उसकी जरूरत है। मैं अपना रंग पूरे समुंदर में मिलाना चाहता हूं ताकि पूरा समुंदर उस रंग में मिल जाए। तो माँ, ये जो जब गुरु ने वुडलैंड अपार्टमेंट बनाया मुंबई में, जी उसके बाद जी पूना 1 बना, देन रजनीशपुरम बना, फिर पूना 2 बना। अगर गुरु ने जी कंट्रीब्यूशन लिया था तो हम क्यों नहीं ले सकते? और हम गुरु के काम के लिए ही ले रहे हैं। गुरु जब डिस्कोर्स दिया करते थे तो 5 रुपए भी लिया करते थे, और गुरु ने अनंत की पुकार में एक आपको एपिसोड भी मिलेगा जहां पे उन्होंने बोला मुझे 1-1 रुपया भी इकट्ठा करना है। जी जब हमारे गुरु आचार्य रजनीश, जो भगवान श्री रजनीश, जब उन्होंने ये सब चीजें इकट्ठी करी, वुडलैंड अपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन से बना, इतना बड़ा रजनीशपुरम कंट्रीब्यूशन से बना, पूना 2 कंट्रीब्यूशन से बना, और जब ये पुणे का आश्रम हम वापस ले लेंगे, जब ये पूना 3 होगा, तब भी हम लोग कंट्रीब्यूशन से ही इसको दोबारा स्टैंड करेंगे। जब हर जगह कंट्रीब्यूशन जा रहा है, देन व्हाई वी कांट टेक अ कंट्रीब्यूशन? एंड देखिए, कंट्रीब्यूशन लेना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप उसका मिसयूज ना करें, उसको जिस काम के जी लिए लिया गया है उसी काम के लिए करें, और उसको बड़ा क्रिस्टल क्लियर, जो आदमी आपको फंड कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड कर रही है, आप उसको बताएं कि ये फंड आया था और ये यहाँ पे खर्च हुआ है। जी 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 स्वामी तो जी। देखिए, बाकी माँ, ऐसा है कि काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, चंद लोग कम हैं, बहुत चंद लोग हैं। जी जैसे एक मेरे को माँ शीला की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले भी काम करने वाले बहुत कम थे और आज भी काम करने वाले बहुत कम होंगे। तो काम जी करने वाले हमेशा ही कम रहे हैं, लेकिन बात करने वाले हमेशा ज्यादा रहे हैं। तो हम लोगों को जी उसके ऊपर इतनी एनर्जी नहीं लगानी, क्योंकि हमें 22 लैंग्वेज कवर करनी है और 650 किताबें सब में कन्वर्ट करनी है, और सब सन्यासियों को, सब मित्रों को, सब ओशो लवर्स को, जो ट्रू ओशो लवर्स हैं, सबको इकट्ठा करना है आपके चैनल के जी माध्यम से। सो वी डोंट जी हैव एनर्जी टू वेस्ट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैं ये बताना चाहूंगी कि एनआईएन लाइव इज कमिटेड to save the legacy of our master through his books and his discourses. And we will continue this series forward, where we will try to bring people from every language, every sector to speak, to tell how they have been going about. So, if you want and you like what we do, we would request you to only subscribe to our channel so that people get updates about the work that we are doing and can contribute to us only by listening to us and taking this legacy forward. We just believe in carrying the good work through our goodwill and not by demanding anything monetarily from our viewers. So, with this, I set the ball rolling. I must say thank you so much Thank to you. all my panelists here today. Uh, Swami Amano Before Mahapath you or close, Ma may I Bodhi say Nisargam. something? Shweta, Please, please, one please, minute. please, please. Yeah. My suggestion to you is, in your programs, don't bring this question of money again. Ji. And my request to you, Dhyan Sumit, is don't answer such question in such detail. Yes. Okay. This whole issue of money comes from mean minds, Yeah. not from Agree. generous people. Hmm. Ji. So do not fall into this trap of mean mind talking. We Great. should not respond to that. The one who pays money, contributes money, has the right to question. Yeah. Agree. If they don't contribute, don't answer their questions. Definitely. So this is, and we need to be
proud in asking for money, Yeah. Yes, and absolutely. we need to be answerable to nobody who simply asks questions. We are Definitely. answerable to people who contribute. We are answerable to the legalities to which we are bound by. We are answerable to the people whom we work with, Ji. not to every Tom, Dick, and Harry who simply questions. Um, the problem that is there is that when you begin work and you step up to ask, because you cannot have everything all the time with you, and getting books done is a big thing. Everyone has questions regarding it, and Correct. people choose That the platform to answer. Ji. no, ma. This is the way of the transactional world. Ji. This is the way of the transactional world. You want to talk the same way in this path? Don't fall in for that. Absolutely, I completely agree with you. I Don't fall in completely for that. We should not answer such questions. If anybody asks me about money without having the privilege to ask me for money, ask me questions. Who has the privilege to ask me questions? the one who's giving it out. One who has given me money, or the one to whom I am accountable legally? Income tax department can ask, my auditor can ask, the people whom I work with can ask. Not every Tom, Dick, and Harry can ask me. And I am not going to Absolutely. answer their questions. Shweta, Yes, Anugrah. I just want to recommend all your viewers to find a book, अनंत की पुकार. मैं Yes. कल वो मैं सुन रहा था, पहला डिस्कोर्स और दूसरा उसमें वो YouTube पे अवेलेबल है. ओशो की सभी किताबें, सभी सीरीज गजब की है, लेकिन ये एक स्पेशल है बहुत ही. और इसमें ओशो कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं भिन्न भिन्न लोगों को, और कितना साफ साफ उन्होंने अपने विजन को बताया है. ये बड़ी गजब की किताब है, वन ऑफ अ काइंड बुक. देखिए, हमने Yes. जब ये भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन को फॉर्म किया और जब हमने मिशन 2031 करा, तो हमारे एक ओशो सन्यासी हैं. ही इज ट्रू ओशो सन्यासी फ्रॉम हिज हार्ट. तो उन्होंने मेरे को फोन करके ये बोला कि क्योंकि तुम जो काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें गाइडेंस गुरु की चाहिए. एंड नाउ अगर आपको गुरु की गाइडेंस में काम करना है, तो आप ये जो बुक है इसको पढ़ें. तो जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया, तो मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी. और इस बुक से पढ़ने से, इसको सुनने से पूरी क्लैरिटी क्लियर हो रही है, कि पूरा क्लैरिटी हो रहा है कि हमको कैसे रोड प्लान करना है, हमारा आगे का रोड मैप क्या रहेगा, कैसे प्लानिंग करनी है. एंड इन द लास्ट, आई एम अगेन थैंकफुल टू योर NIN लाइव चैनल to bring all these beautiful people on this platform who are already working for Guru's master's work. So I will request you to take this series ahead with with the new languages, with the new faces, so all people can come together. Yes. And Yes. we can work in unite together. Ji. As I come to an end on today's episode, I once again request people to subscribe to the channel, because this is how we feel the legacy of the Guru has to continue. The legacy of the Master has to, be spread. The essence of his teachings have to reach to the people for them to soak it within themselves. Thank you so much, Ma Bodhi Nisargam, Swami Amano Mahapath. Thank you so much, Swami Dhyan, Sumit. Thank you, Swami Anugrah, Thank you, for taking out your time and coming here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pranam. Thank you so much.